गोवा शिपयार्ड कामगार एकवटान गोवा शिपयार्ड लिमिटेशनाच्या मॅनेजमेंटा आड आवाज काढला। कामगारांक त्रास करता तांकां पगार वाड सारको ना म्हूण एकवटान वास्को पत्रकार परिशद घेतली। वयल्या पोस्टावेल्या अधिकाऱ्यान 40% वाड जाल्यार कामगारांक फक्त 15% पगार वाडाची भाशा करता म्हूण कामगार चाळवल्यात। तांकां खंय सारको न्याय जाय। Goa Shipyard Limited is a public sector undertaking. It is a defense of India undertaking. It is a profit-making industry. And today, what do we find? What are the wages which newly joined workers get on joining Goa Shipyard? The wages which a new worker gets in Goa Shipyard is around 11,000 only, which is below the minimum wages. So what the workers are demanding now, this meeting is regarding the wage revision that is due in Goa Shipyard Limited. What we find is that the management of shipyard is through back doors trying to enforce a very low wage rise on the workers. What the workers are demanding is a fair wage rise. What is the demand of the workers? Workers are demanding that the minimum wage should be 21,000 rupees as fixed by the central government for the government employees and public sector undertakings. Recently, shipyard increased the wages of officers. Officers have been given a wage rise of 40%, whereas low wage employees are being asked to take only 26% wage rise. So this type of unfair, discriminatory approach is not acceptable to the workers, and workers are very much agitated over it. That's why they have all gathered here to discuss, because recently we found that the management has called 2 minority unions, and without signing a MOU and without showing that MOU to the workers, they are taking undertakings from the workers, saying that forcibly trying to take the undertaking that they are ready for whatever has been signed by the minority unions without showing them what has been agreed by them. आता पळोवया गोयच्या कांय सरभोंवतणच्यो खबरो। कलेक्टिव्ह एक्शन फॉर डायलॉग अँड सोशल हार्मनीत भारतातले वेगवेगळ्या धर्माचे धर्मगुरू वांटेकार जाल्ले। परिशद 5 एप्रिलाक मडगांव रवींद्र भवनात जाली। We have many cultures and these cultures can live together. This country has a future, and that future lies in the coexistence of its people in love, peace and harmony. भारत में रहते हैं तो हम भारतीय हैं। भारत को मजबूत करो, भारतीयता को मजबूत करो, यही हमारा पैगाम है, यही इंसानियत हमारी देश की सब लोगों को मिलाकर चलने का एक मकसद है। गुरु नानक का मैसेज यूनिवर्सल ब्रदरहुड का था, वही मैसेज को लेकर ये सर्वधर्म संसद। It is in this background that we wish to express our deep worry and concern at the way forces of hate and divisions are striving to polarize the Indian polity. आज का भारत किसी एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति का नहीं है। आज ये भारत है, हम सबका है। जिसने इस देश में जन्म लिया है, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भारत उसका है। रवींद्र भवन मडगांव आणि म्युझिक माफिया 8 एप्रिलाक संवसारीक कोंकणी दीस मनयता। त्या दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात। जागतिक कोंकणी दिनाच्या निमतान जो 9 एप्रिलाक मनयतात शेणै गोंयबाबाच्या पुण्यतिथी दिसा निमतान, तो ह्या वर्साक आमी 8 एप्रिला दीस मनयतले, आयतारा दीस। आनी द म्युझिक माफिया आनी रवींद्र भवन हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ जातली रवींद्र भवनाक 8 तारखेक सांजेच्या 6:30 वरांचेर। ह्या कार्यावळी भितर गोंयचे नामनेचे कलाकारा वांगडाच लॉर्ना जे नायटिंगेल म्हण गोंयची फामाद आसा, ताजी बी संगीताची कार्यावळ जातली। मडगांवाक ख्वाजा गरीब नवाज स्किल डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर उक्ते केला। अल्पसंख्यांक कुशळ रोजगाराचे प्रशिक्षण दिवंक सेंटर वावुरतले। जैसे हाउसकीपिंग के कोर्सेज होते हैं, जैसे एफएनडी के कोर्सेज होते हैं, बिकॉज हमें पता है गोवा में
टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का कितना पोटेंशियल है। गोवा हैज ह्यूज पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म। गोवा में हर साल हजारों होटल रूम्स बन रहे हैं। सो इन ख्वाजा गरीब नवाज स्कीम हमने फाइनलाइजेशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज में ही की है। को इस पर फायदा हो, माइनॉरिटीज को फायदा हो, क्योंकि हमारे बच्चे एजुकेशन में हमेशा पिछड़े रहे हैं, हमारे बच्चे हमेशा ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहे हुए हैं। उनकी माली हालत की वजह से, फाइनेंशियल की वजह से, कोई ना कोई दिक्कत की वजह से हमारे बच्चे आगे पढ़ नहीं सकते हैं। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।